Very good morning to all of you, dear students. I hope you all are fine and safe at your home. So after many days, now we are starting our exercise again. So exercise, as you know that chapter fifth we are started already, and chapter fourth we are started already, and exercise 4.4 last class we completed exercise 4.4. So now we are going to start our next exercise 4.5. So 4.5 we are going to start. So the first question, there is no theory. Directly we can start the question also. If you have faced any problem, then you can ask. But theory is not here. Okay. So exercise 4.5. फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग. कन्वर्ट द फॉलोइंग, इसके अंदर आपको 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सॉरी 9, इनको आपको कन्वर्ट करना है. ओके, तो हाउ टू कन्वर्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, 4.51 किलोमीटर टू मीटर. किलोमीटर टू मीटर. So as you know that kilometer is bigger than meter. Kilometer is bigger than meter, and as you also know that 1 kilometer equals to 1000 meter. 1 kilometer equals to 1000 meter. As you know that, so for this 4.51 multiplied by 1000, the result is 4. देखो दो जीरो से तो ये पॉइंट रिमूव हो जाएगा, एक जीरो पीछे बचेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 4510 मीटर. आपको इनका मल्टीप्लाई करना है, देन आपको यही आंसर मिल जाएगा. ओके, एनी डाउट. सो द नेक्स्ट सेकंड वन, 3.75 मीटर टू सेंटीमीटर. सो एज यू नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर इक्वल्स टू 100 centimeter. Then meter is bigger than centimeter, so multiply is there. 3.75 multiplied by 100. When you make the multiply, then you got 375 centimeter. Okay, any doubt? So the next 4 kilometer, 425 meter to meter, इन दोनों को मीटर में चेंज करना है. तो 425 is already meter, वो तो मीटर ही है. We have to change 4 kilometer. So 4 kilometer, 4 multiply 1000, then 4000 meter, and the remaining 425 meter. You have to add both of these, then you got a result 4425 meter. Okay, पीछे वाला तो मीटर था, इसलिए उसको चेंज नहीं करा. नेक्स्ट 175 kg to gram. So as you know that 1 kg is equal to 1000 gram. Okay, so 175 multiplied by 1000, so 175,000 gram. This is your answer. Next, 1.435 gram to mg. So as you know that 1 gram equals to 1000 mg milligram. Okay, 1.435 multiplied by 1000, then the final answer is 1435 gram. Sorry, mg. 1.mg. Okay, when you make the multiply, then you got this answer. The next one, 370 gram to kg. Now just see here, this is all bigger to smaller, bigger to smaller, and bigger to smaller. All things in bigger to smaller. We have to change bigger to smaller. But now gram is here, kg is here. Smaller to bigger. When smaller to bigger is there, then we will make the divide. क्या करते हैं हम? Divide देते हैं. Okay, when smaller to bigger, you know that gram is smaller than bigger kg, so we'll make here the divide, and by 1000, and 370 by 1000, so answer is 0.370 kg. This is important, just take care about this thing. When we have changed the digit, unit smaller to bigger, then we will make the divide, and bigger to smaller, then multiply. Okay, here also liter to ml, bigger to smaller, multiply 7.502 multiplied by 1000. So as you know that 1 liter is equal to 1000 ml. 1 liter equals to 1000 ml. So multiply by 1000, the result is 7502 ml. Okay, so next ml to liter, smaller to bigger, again smaller to bigger. Smaller to bigger, then make divide 5 by 1000. 5 by 1000, the answer is 0.005 liters. This is your answer. And liter to kiloliter, again smaller to bigger, smaller to bigger. This is kiloliter and this is liter, smaller to bigger. So 2.5 divided by 1000. Final answer is
0.0125 kiloliter. So this is the answers and this is the way to convert the following decimal numbers. Okay, so take the screenshot and write in a notebook. If you face any problem, then you can ask on Google Meet class. Okay, take the screenshot. So next students, our second question is there. So the second question is Ankita has 5 packets of milk. अंकिता के पास 5 पैकेट्स है मिल्क के. Each packets contain 2.25 लीटर मिल्क. एक पैकेट के अंदर कितना मिल्क है? इतना मिल्क है. How much more milk will she needed to fill 40 bottles? 40 bottles उसको फिल करनी है और कितना मिल्क चाहिए होगा जबकि कैपेसिटी कितनी है 325 ml each bottle. Okay, so first as you know that each packet contain milk. Each packet contain milk. How much? 2.25 liter, and this is ml. So liter we have to change in the ml. So as you know that liter is bigger, so bigger when we have to change 2.25 multiply by 1000. So 2250 ml milk each packet having. Okay, so now we know that total number of packet 5. Okay, so the quantity 5 packet contain मिल्क. 5 पैकेट में कितना मिल्क आएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 2250. इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आप 5 से. 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 to the 10, 10 into 12 कैरी 1, 5 to the 10 number 11 ml. 5 पैकेट में इतना मिल्क आएगा. Okay, so now we will do for next bottles. Capacity of, we know that capacity of a bottle, how much? 325 ml. So we know that capacity of 40 bottles, 40 multiply 3 to 5. So as you know that make the multiply. 4 5 ja 20 carry 2, 4 2 ja 8, 8 and 2 10 carry 1, 4 3 ja 12 and 1 13,000 ml. और कितना है इसके पास मिल्क? 11,250 ml. So milk needed 13,000 minus 11,250. इनको माइनस कर देंगे आप, then you got your result. 13,000 minus 11,000, it means 2,000, then 1,750. Sorry, हाँ करेक्ट, 1,750 ml मिल्क जो है इसको चाहिए होगा. एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट इन लीटर, देन 1,750 अपॉन 1000 1.75 ml सॉरी लीटर, इतना मिल्क इसको और चाहिए होगा. ओके, एनी डाउट? पहले हमने क्या करते हैं, पैकेट की क्वांटिटी फाइंड कर ली, फिर बॉटल की क्वांटिटी फाइंड कर ली. दो नंबर से देख लिया किसके अंदर ज्यादा है, बॉटल के अंदर ज्यादा चाहिए तो इतना ही है, इसको माइनस कर दिया, देन द रिमेनिंग वी गॉट इतना मिल्क इसको चाहिए. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट इन योर नोटबुक. Okay students, so the next the third question. In the third question some printing mistake is happened, so that's why the answer is not coming. I checked 2 or 3 times, so we will leave the third question. We just cut the third question, just cut the question number third. It will not come in exam. Okay, so just you cut the question number third from your book. It will not come in exam. If any mistakes I got, then I will solve once again. Okay, but now you cut the question number third. Next, the fourth question. A floor of 4.5 meter long and 3.6 meter wide is to be covered with tile. 6 centimeter square tile cost 23.25.
what will be the cost of the cost to cover the floor with this tiles. इस फ्लोर को टाइल्स से कवर करने की कॉस्ट जो है वो क्या होगी, you have to find out the cost. 6 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल कॉस्ट 6 सेंटीमीटर एक टाइल की जो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर उसकी कॉस्ट कितनी दी हुई है वाला आपको 23.25. So we know that length कितनी है बेटा 4.5 मीटर. This is centimeter. Just see here centimeter, so we have to change in centimeter. 4.5 multiply by 100, then 450 centimeter. Okay, and breadth is 3.6 meter. Again 3.6 multiply by 100, then 36 centimeter. So now first we have to find out the area of the floor. तो area of floor किस टाइप का बेटा शेप क्या फ्लोर का, लेंथ एंड ब्रेथ. तो लेंथ एंड ब्रेथ होती है रेक्टेंगल में. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर इज देयर फ्लोर फ्लोर इज लेंथ मल्टीप्लाई breadth. So length multiply breadth, then 450 multiply 360, then you make the multiply 45 multiply 36. Okay, 6 5 that 30 carry 3, 6 4 that 24, 24 and 3 27, 5 3 that 15 carry 1, 3 4 that 12 and 1 13, 0 7 and 5 12 carry 1, then 16200 centimeter square. This is the area of the floor. This is the area of the floor. And area of, and we know that area of one tile भी आपको दिया हुआ कितना 6 centimeter. This is the area of one tile. Okay, so first we have to find out number of tiles. Number of tiles कैसा आएगा, आप इस फ्लोर के एरिया में एक टाइल के एरिया का डिवाइड दे दोगे तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ टाइल्स. तो फ्लोर का एरिया क्या है 1620030 डिवाइड बाय 6. ओके, देन 6 6 1 6 6 2 12, 6 3 14, सॉरी 6 3 18, तो 6 2 12, देन 12 4 रिमेनिंग, 6 7 42 and 30. The number of tiles is 27,000 टाइल्स जो है उस फ्लोर के अंदर आ जाएगी. ओके, इतनी टाइल्स आ जाएगी. तो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट फॉर द फाइंडिंग द कॉस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 23.25. ओके, सो द कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, वी हैव टू फाइंड टोटल कॉस्ट. इट मींस 27000 का मल्टीप्लाई आप 23.25 से कर दोगे, देन यू गॉट योर टोटल कॉस्ट. ये आपको क्या मिल जाएगी, आपको टोटल अपनी कॉस्ट मिल जाएगी. सो मेक दिस मल्टीप्लाई. आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है एंड राइट हियर द कॉस्ट. जो भी कॉस्ट आ रही है आपको वो मेंशन करनी है. ओके, एनी डाउट? दिस इज टू मच इजी. First, length and breadth is given, so we have to change the length and breadth in centimeter because the remaining thing in centimeter only. Okay, so afterwards we have to find out the area of the floor. Floor का area find कर लिया, इतना आ गया length into breadth, तो कितना आ गया floor का area. Okay, then multiply करने के बाद में the remaining, we know that the area of one tile, एक टाइल का एरिया आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो 6 इस टोटल एरिया के अंदर आप एक टाइल के एरिया का डिवाइड दोगे तो आपको मिलेगा 27,000 टाइल्स. इतनी टाइल्स जो है यूज आएगी. आफ्टरवर्ड्स 27,000 टाइल्स का मल्टीप्लाई, एक टाइल की कॉस्ट कितनी हुई है 23.25, दोनों का मल्टीप्लाई आप कर दोगे, देन यू गॉट योर आंसर. आपको आपका आंसर मिल जाएगा. ओके, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क. मेक मल्टीप्लाई हियर, मेक श्योर दैट I will not the place is not here, so not possible to make multiply. You have to make the multiply both of this number and write here. Okay, that is your final answer. Okay, so take the screenshot and write in the notebook. You have to make the multiply of both of these numbers. Okay students, so the last question of our exercise 4.5. Afterwards 4.5 is completed and next class we will completed 4.6 also. Afterwards our chapter is completed.
ओके सो द नेक्स्ट, अ मैन हैज अ फील्ड ऑफ द डायमेंशंस, एक मैन के पास एक फील्ड है, उसका डायमेंशन 256.2 मीटर बाय 185.5 मीटर, फील्ड फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, उस फील्ड का एरिया आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट यू जस्ट सी दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ, both are different, both numbers are dimensions are different, it means the shape of the field is rectangular. What is the shape of the field? First we have to find out the shape of the field. तो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों की dimensions अलग अलग है, if both dimension is same then that shape of the field is square, but now the dimension of both field is both of the field is that shape different, so that shape of the field is rectangular. Okay, so we know that length of field कितनी है बेटा 256.2 मीटर and breadth of field 185.5 meter. So the area of field, area of length into breadth, then 256.2 multiply 185.5, आपको क्या करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2562 1855, 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 3 5 6 जा 30 30 and 1 31 कैरी 3, 5 5 जा 25 25 and 3 25 and 3 28 carry 2, 5 to the 10 10 and 2 12. Okay, so 5 next same here also 1 8 afterwards 8 to the 16 carry 1, 8 6 ja 48 48 and 1 49 carry 4, 8 5 ja 40 40 and 4 44 carry 4, 8 2 ja 16 16 and 2 4 20. ओके नेक्स्ट 1 है तो ऐसा कैसा देगा 6 2 6 5 and 2, afterwards sum is 0 1 8 and 7 15 carry 1, 9 and 1 10 18 18 and 20 22 carry 2, 6 and 4 10 10 and 12 13 13 and 15 carry 1, 5 and 1 6 and 1 7 and 2 and 2 4. It means the area is 4 7 5 2 5 1 0. अब पॉइंट 4 7 5 2 5 1 0 पॉइंट आएगा इसमें, एक प्लेस यहाँ पे और एक प्लेस यहाँ पे, इट मींस टोटल 2 प्लेस आर देयर, सो आफ्टर 2 प्लेस यू जस्ट पुट द पॉइंट, दिस इज द एरिया ऑफ द फील्ड. अब ये क्वेश्चन क्या कहता है आगे, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, हमने फाइंड कर लिया. He left half of the field area for the making temple. टेम्पल के लिए उसने हाफ फील्ड छोड़ दिया, आधा फील्ड, कितना फील्ड छोड़ दिया हाफ. तो एरिया ऑफ टेम्पल, एरिया ऑफ टेम्पल कितना छोड़ा उसने, हाफ छोड़ा, तो उसमें 2 से डिवाइड दे दो, 4752.10 डिवाइड बाय 2, हाफ छोड़ा है तो इसलिए उसमें 2 से डिवाइड दे देंगे, then 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 and 2 5 जा 10. 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो आपका आंसर आ गया 23,762.55 मीटर स्क्वायर. ये एरिया ऑफ टेम्पल आ गया. ओके, सो दिस इज टू मच इजी. So as you know, I think you understood all of these things, whatever I told. Only just cut the question number 3rd because some problems are having in question number 3rd, some printing mistake or like this. So just cut the question number 3rd and the remaining all questions you have to write in your notebook. If you face any problem, then you can ask on Google Meet class. Okay, thank you. Next class we will start in the exercise 4.6. Thank you.